So welcome back students. We are left with our last topic, that is the replenishment of nutrients in soil. Replenishment mean to recover the nutrients in the soil. Why do we need to recover the nutrients? Because we know that जो plants होते हैं they derive the nutrients फ्रॉम द सॉइल और सॉइल में उनकी कमी हो जाती है, तो फिर वो सॉइल में फिर से न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आएंगे, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. वो कहाँ से आते हैं, उनके दो मेथड्स हैं बेटा. दे कैन बी एडेड बाय आर्टिफिशियल मेथड्स, जैसे हम फर्टिलाइजर्स मैन्योर यूज़ करते हैं, वो फील्ड में ऐड करते हैं फार्मर्स, जिनमें नाइट्रोजन होती है, फॉस्फोरस होती है एंड पोटाशियम, डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट्स होते हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स ऐड कर देते हैं सॉइल में. बट देर आर सम सिंपल ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड सैप्रोफाइट्स के बारे में पढ़ा, जिन्होंने जो क्या करते हैं, दे ऑल्सो naturally add nutrients to the soil. So this is the replenishment of nutrients in soil. So the plants absorb nutrients from soil. This results in reduction of nutrients in soil. This is very important for the soil to be replenished, because अगर further replenishment नहीं होगी nutrients की soil में, तो soil में कोई भी nutrient नहीं बचेगा and जो plants further grow नहीं करेंगे. So this is very important. So this can be done by the two ways, naturally as well as artificially. Artificially we have discussed by adding manure. How can we add it is added by natural methods that we should discuss now. The first is the saprophytes. They play important role to play in enrichment of soil. They are the organisms which decompose the dead and decaying animals and plants into simpler one, and जो simpler होते हैं they mix with the soil and add nutrients into the soil. These simpler matter can be easily absorbed by the other organisms. For example, some bacteria break the proteins of the dead and decaying animals and plants into nitrates. हमने पढ़ा था leguminous plants में, जहाँ पे there are the rhizobium bacteria present in the root nodules. रूट नॉड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, जो क्या करता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है, विच इज़ फर्दर यूज्ड बाय प्लांट्स इन फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स, जिससे वो प्रोटीन्स लेते रहते हैं. क्लियर? सो दिस इज हाउ देयर आर सम बैक्टीरियाज आल्सो विच हेल्प अस. These nitrates are taken up by plants to make amino acids and the proteins. Clear? And next is, plants require large quantity of nitrogen to produce proteins. After one harvesting season, the soil becomes deficient in nitrogen. तो क्या होता है, जो some bacteria like rhizobium convert atmospheric nitrogen into nitrates. This we have discussed. Since these organisms cannot prepare their own food, they live in the root nodules of leguminous plants. Leguminous plants जैसे peas होते हैं, छोटे छोटे plants, grams, मूंग and beans, and depend on them for food. जो rhizobium bacteria है, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता, तो फिर ये क्या करता है, जो leguminous plants के roots में रहता है और उनके roots में से ये nutrients लेता रहता है and प्लांट्स की भी हेल्प करता रहता है बाय प्रोवाइडिंग देम नाइट्राइट्स, विच इज नाइट्रोजन कंपाउंड्स. These bacteria supply the nitrogen to the plant. Thus the leguminous plants and the nitrogen fixing bacteria. Which is nitrogen fixing bacteria? That is rhizobium. It shares a symbiotic relationship. ये दोनों एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं. In the previous video also we have discussed it. This association helps in replenishment of the soil naturally. ऐसे जो nutrients है वो फिर से क्या होती रहती हैं, replenish होती रहती हैं soil में. Clear? So this is our topic. In our next video we will be discussing about the practice zones and the checkpoint extra questions of the notes. So thank you for watching.